I took advertising as my career option, and back Okay. then people literally laughed at me. My own relatives, they laughed at me saying that तू दाढ़ी बढ़ा के झोली अटका के पेंटिंग कर देगा. Well, दाढ़ी भी है, झोली भी है, but by grace of God, I am doing fairly good. Any positive thing in your favor? See, for me, nation first. अगर देश दुरुस्त है तो आप दुरुस्त हो. देश में खलबली है, आपका लाइफ अनसेटल्ड है. You need peace, security, and harmony amongst all communities and races and religions. You need peace. So whoever brings that peace, harmony, and this thing, I am favoring that government. वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ सोशलाइज। मेरा नाम है पुनीत और हर बार की तरह आज भी हमारे साथ एक नए गेस्ट हैं जिन्होंने बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्मों में एज अ सिनेमैट काम किया है और अब एज अ डायरेक्टर काम कर रहे हैं। लेट्स वेलकम केदार गायकवाड़ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। Thank you so much for having me. सर देखिए, एज अ डायरेक्टर आपकी कुछ मूवीज आ रही हैं और एक बहुत ही बड़ी मूवी अभी रिसेंटली आपकी आई है, उसके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपके करियर के बारे में जानना चाहूंगा, कहाँ से शुरुआत हुई बॉलीवुड में? एक्चुअल में बहुत सारे लोग आने के लिए कितने सारे स्ट्रगल्स करते हैं, आपने स्ट्रगल किया, कितने साल का एक्सपीरियंस हुआ, थोड़ा सा उसके बारे में आप बताइए। So I come from a very humble middle class Maharashtrian background. ओके। I come from Mumbai, Maharashtra. So, obviously I'm a Maharashtrian. And uh, uh, from my family, there is nobody in the film industry. So I do not have any film background, so to say. ओके। My journey is really funny so far. I mean, I call myself an odd man because my career has taken such a shape where I've always been an odd man out. जब मैं ओके। टेंथ का एग्जाम जब अप्रोच कर रहे थे, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 95 96. सो ओके। यहाँ पे महाराष्ट्र में ट्रेंड ऐसा था कि everybody wanted to do the science subsequently. I mean, in this number, science, हम्म। commerce, and arts. But my inclination towards arts and culture. So I took advertising as my career option, and back ओके। then people literally laughed at me. My own relatives, they laughed at me saying that तू दाढ़ी बढ़ा के झोली अटका के पेंटिंग कर देगा. Well, दाढ़ी भी है, झोली भी है, but by grace of God, I am doing fairly good. So I took commercial arts as my career option, and I did my advertising. So when you do commercial arts advertising, you more often than not you end up working in an ad agency. But like I said, my journey has been an odd man out. So I again, in the last year, second last year probably, one of my cousins introduced me to my ex bosses, who was working as a cameraman back then in Mumbai ओके। film industry. हम्म। He was doing a lot of ad films and small films and all that. So I went to meet him one of the days by bunking college, ओके। and I stood in the studio for 8 to 9 hours. I did not even sit because I found that whole activity so interesting. They were shooting an ad film, and there were so many lights, so many products, big camera, celluloid camera. हम्म। I just got hooked onto it, and I just stood there. मुझे समझ में नहीं आया 9 घंटे कब खत्म हो गए, शिफ्ट कब खत्म हो गया. And that is the day, that is the point I decided that I want to do this. Anyway, I was doing my specialization in photography for हम्म। last my specialization subject was photography. So anyway, my inclination was always towards the photography, and this was an extension. But like when I met my ex boss, he said still photography and cinematography is a complete different ball game, because as a still हम्म। photographer you just think of one frame, whereas as a cinematographer you have to think about the entire project, the हम्म। entire story. After finishing my college, I went to film school, Pune Film School, FTII. But I came to ओके। know that they required 10 plus 2 science out of each person
if they wanted to join the film school back then. हम्म. Obviously, I had done my commercial art, so I had no other option but to sort of learn my craft on the set. Luckily Okay. enough, I got an opportunity with Mr. Limay, Mahesh Limay, who was working on many ad films and music videos. And so I started my journey as an assistant cameraman in the film industry. Okay. And I worked with Mahesh Limay for 6 to 7 years at a stretch. I worked Okay. with a couple of other DOPs also. The name is Sushil Rajpal and Raja Sayyed. Hmm. I got a lot of good guidance, and the films as an assistant cameraman I worked on were very big. Two Marathi films which won national award, Uttarayan and Evda Saban, are Okay. the two Marathi films I assisted Mahesh Limay as a DP, assistant cameraman. And Okay. Hindi films I worked on were Corporate, Traffic Signal, Fashion, and Laga Chundri Mera. So all these big directors, big visionaries, Madhur Bhandarkar, Pradeep Sarkar, a lot of ad film directors who were best in style, Hmm. storytelling. So I learned a lot on the field. Okay. And back then, cinematography was a different ball game because we used to shoot on celluloid. सो आप Okay. फिल्म कैमरा पे शूट करते हो, आप उसको डेवलप करते हो, फिर आपको 2 दिन के बाद रिजल्ट देखने मिलता है. You Hmm. set an eyepiece and you have to visualize your frames and shoot accordingly. You know, Today things are fairly easier. Digital camera is what you see is what you get. So Hmm. not putting anyone down, but everyone's a DOP today. But back then, when I was uh, getting into the film industry, things were really tough to become a cameraman, to become a DOP. तब And से लेके अब तक में कितना डिफरेंस आपको लगा? ये कितना डिफरेंस इस फील्ड में आ चुका है? there is a lot of difference back then Hmm. and now. Because see, earlier the technicians used to get a lot of respect. A DOP Okay. used to get a lot of respect for the craftsmanship, and there were limited DOPs who were really good in their craft. And for the same reason, because we used to shoot on celluloid shooting on film camera was not everybody's cup of tea because Hmm. it required a lot of practice, lot of experience. Like आप नए नए यंग डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करोगे. You जी. will obviously prefer going to an experienced doctor who has a lot of experience. Similarly, Hmm. experienced DOPs were in demand. Now the trend has changed, and because of the digital camera, anybody and everybody is a DOP in 6 months, 12 months. They don't want to assist, they don't want to take any experience. And today I hear this term a lot. Anything that you're shooting in a rush, the DOP use this term post में देखा जाएगा, post में देख लेंगे. Hmm. So we were taught post में कुछ नहीं होता. You have to know while shooting what is right and what is wrong, and how to light the particular situation for the celluloid camera. बट So पहले भी तो I ऐसा होता होगा कि पोस्ट में ही चीजों को ठीक कर दिया जाता होगा. पहले भी तो ऐसा कुछ होता होगा या अभी नहीं, होता है सिर्फ? पहले नहीं होता था ऐसे, क्योंकि हम्म. ग्रेडिंग के जो सिस्टम्स होते थे वो बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते थे. ग्रेडिंग सिस्टम में एनालाइजर ओके. होता था, उसमें RGB एंड कॉन्ट्रास्ट, इतने 4 ही नॉब्स होते थे. ओके. तो आप पूरी फ्रेम को RGB या कॉन्ट्रास्ट इतना ही टच कर सकते थे. टुडे दैट इज हम्म. नॉट. टुडे देयर आर सो मेनी सॉफ्टवेयर्स. हम्म. दाविंची, लस्टर है, बेस लाइट है. बेस लाइट इज इट्स लाइक एन ओशन. यू कैन डू एनी गॉडडैम थिंग टू द फ्रेम. ओके. आपको मेरे लेफ्ट ऑफ द फ्रेम में बर्नआउट दिख रहा है, आपको वो पैच डाल के वो आप उसको लाइट को कंट्रोल कर सकते हो. यू कैन डू एनी गॉडडैम थिंग. So, things हम्म. are fairly easy in today's day and time compared to those days, because, that is why technicians and cameramen were very respected back then. मतलब बहुत फर्क आया है इसमें. हेट स्टोरी Yeah. 2, चॉपस्टिक्स, Yeah. ये दो ऐसी मूवीज हैं जिनमें भी आपने काम किया है, तो उसके एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा बताओ आप. So I started my assistant cameraman's career around 2001 when I was ओके. just a college fresher, around 21 years old, 21, 22 हम्म. years old. And I knew nothing about filmmaking. I knew nothing about cinematography. So first 2.5 years, I was just wandering off on the set. And
I had given up the idea of becoming a DOP because in first 2.5 years I understood nothing. एक लाइट यहाँ से वहां क्यों शिफ्ट हो रहा हम्म है, कैमरा का पोजीशन यहाँ से, आई कुड अंडरस्टैंड नथिंग बिकॉज आई डिड नॉट गो टू एनी फिल्म स्कूल, दो आई वॉज reading books and all that stuff. But slowly, after 2.5 years, I started getting a grip, and हम्म suddenly I started imagining and visualizing, and हम्म learned a lot faster. After 7 8 years of assistantship, I decided to work on my own, and like I said, my journey has been very funny. I always require a hard slap on my back. Only then I learn a lesson, probably. You know. So as I was assisting, I was हम्म working with an Australian cameraman. I अच्छा forgot the name. And over here in India, the system is little different. A focus puller, I used to work as a focus puller and lighting assistant both. ओके So while working with that Australian guy, I was pulling focus, and I tried helping him out in lighting as well, and he got offended and he used some racial bad words, and ओके he said, Mike, I need to let you go. And he said few bad things about me, which was really ओके hard because I had earned reputation as an assistant cameraman over the हम्म last 7 years that I was working. And I was literally in tears. I came home and I was literally in tears. I called when my did this happen? When did this happen? roughly around 2008. 2008. Okay. Yeah. So I Okay. called my ex-boss and I told him that, I'm feeling humiliated and I'm feeling dejected. And he just Hmm. asked me one question: why are you here in the industry? To become a focus puller, to become an assistant, or to become a cameraman? Hmm. And Okay. there was my answer. That day onwards, I decided I will not assist anyone anymore. And, I moved on and I started searching for my work, independently. And Hmm. slowly but surely, I started getting small ads, music videos. I shot a lot of music videos in Delhi, Chandigarh, a lot of ad films, small ad films, brand Hmm. films. And that is how I started working as a cameraman, independent cameraman. Okay. And slowly but surely, I shot few Marathi films, less known films. And, I landed up getting Hate Story 2. So Hate Story 2 was my first, so to say, Hindi feature film. Or Okay. before that, I had shot a film called Enemy in Hindi, Hmm. Hmm. which starring Sunil Shetty, KK Menon, Johnny Lever, Mithunda. It did not do well at the box office for whatever reasons. It was not distributed properly or whatever. Ashu Trika was the one who directed that film. It was a great Okay. experience. That film I shot on 16 camera, and working with these legends in the industry was an amazing experience. Then I landed up with Hate Story 2. Hate Story 2 was a runaway success. It released in 2014, I guess, and that sort of gave me a name as a cameraman because Hmm. it was shot in very limited budget and it earned some 50 odd crores on the box office. So a lot of people Okay. loved it Hmm. and Hmm. songs were popular. Aaj Phir Tum Pe Pyar Aaya, and Hmm. so many songs Kedarji, were you have popular. become a good name now. अब वो Yeah. ऑस्ट्रेलियन फोटोग्राफर कहाँ गए? उनको तो पता होगा आपके बारे में. Unfortunately, I forgot his name. अरे रे. Otherwise, I would have gotten in touch with him. Some Andy, He must and be searching you. कहीं तो ढूंढ maybe रहे होंगे वो आपको भी. no, he'll be happy that he threw me out. That was a turning हाँ. point in my life. ठीक है, उनको आज रिग्रेट हो रहा होगा कि काश ऐसा नहीं किया होता. No, no. Part and parcel of the game. It's okay. हाँ, बिल्कुल. चलो आगे चलते हैं. अभी ट्रेंड में एक टॉपिक है, क्रिकेट. अब आपकी मूवी का नाम देखकर हर किसी को यही लगा होगा कि ये किसी एक क्रिकेटर के ऊपर होगा या किसी स्पोर्ट्समैन के ऊपर होगा जिसने मैच फिक्स करके दूसरी टीम को जिताया, और जो जो सबको पता है होता क्या है. लेकिन जब वो ट्रेलर देखते हैं तो उसमें पता चलता है कि ये तो टेररिस्ट अटैक्स के ऊपर है, पॉलिटिकल इसमें रोल है. तो इसके बारे में बताओ कि ये थॉट कहाँ से आया कि मैच फिक्सिंग नाम रखते हैं एक तो मूवी का, और अ, इस टॉपिक पे मूवी बनानी चाहिए.
So when I was after shooting a very famous Marathi feature film Dharmavir, Mukkam Hmm. Post Thane, which is Okay. based on ex-CM Eknathji Shinde's political guru, Dharmavir Anand Okay. Dige. It was his biopic, and it Okay. went You on to. directed that film. No, I shot that film as a You cameraman, shot. Okay. and it was a super hit film in Maharashtra. And so after that film, I was not getting work for over a year, Okay. and few people who I worked with in the past were backstabbing me by saying that do not work with this guy because this guy is not good at his work. Hmm. Hmm. His Hmm. work is not good, and I was surprised that after shooting such a super hit film, which is looking good, press people are praising it, normal people are praising it. How come Hmm. I am not getting work? And so you know, जो कहते हैं ना कि when your plans are not working, Hmm. God is planning something big for you. I believe in that. Hmm. So suddenly I got a call from the current producer, uh, who is the producer of Match Fixing. She Okay. called me one day and she said, I've bought a book. I've got a book and I've bought a rights of that book. It is on Malegaon Blast. Like I said, I am a huge fan of politics and geopolitics. So Hmm. when I heard, I was like, wow. And then I jumped onto that book. I read 10 pages and I sent her a text in the middle of a night. This is a feature film material. Hmm. And she was like, thank God you said that because I purchased the rights of this book for the same reason. I did not know what she had in mind when she wanted me to read the book. So मैंने उनको खुद बोला कि if at all you are planning to make a film, then Hmm. I would like to direct it because this is my favorite topic and I can do the justice. पॉलिटिकल फिल्म शूट करने का, लार्ज स्केल शूट करने का एक्सपीरियंस था. आई हैड शॉट चॉपस्टिक्स, हेड स्टोरी टू धर्मवीर, Hmm. फर्जन, द हिस्टोरिकल Marathi film. So I Hmm. had a massive experience as a cameraman, as a director. So I jumped into it. We met the financer. The project was greenlit, and 1st October 2023, we signed an official contract, and match fixing started. Now, Okay. when match fixing started, along with that book, there is another book called Saffron Terror, Hmm. written by RVS Mani, who was a undersecretary back then. Hmm. He Okay. has written the same book on the same topic. And in his book, he says that Indian intelligence agencies had given the intel about 26/11 attack to the concerned department, but it was Okay. overlooked. It Okay. was overlooked. Okay. And so, first in place, 26/11 attack shouldn't have happened with the intel Hmm. provided to the current agencies and the government. So, उन्होंने ये लाइन कही है कि ये अटैक होना ही नहीं चाहिए था. It was as if the match between India and Pakistan was fixed. So, line, इसी पे वो एक लाइन है ना जो आपने शायद yeah, एक आपके yeah, ट्रेलर में सुनी है कि जरूरी नहीं कि yes. हर मैच खेल के मैदान में खेल ही के फिक्स मैदान हो। में fixed. कुछ मैचेस राजनीति के फील्ड में मैदान भी में भी फिक्स fixed होते हो. हैं। Yeah. ओके। So, and then when I started reading the book and when I started reading about the script and all हम्म। that, I followed a lot of politicians' Twitter handles also, हम्म। and they were, वो जो आरोप प्रत्यारोप चलते हैं ना एक दूसरे के ऊपर, ये ईवीएम हैक हुआ तो a particular party fixed the match. हम्म। ये फिक्स था, वो फिक्स था. So match fixing word was very trending politically, ओके। a year back. And I thought, मैंने जब भी स्क्रीन प्ले राइटर से बात की तो मैंने बोला कि यार देख, मुझे ना प्रोपागेंडा फिल्म नहीं बनानी. टुडे द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट दैट आई एम गेटिंग even from non-Hindus or non-BJP followers is that match fixing is not a propaganda film or it is not politically driven film. हम्म। Okay. ओके। And my first discussion with the screenplay writer was the same, that I want people to talk about this film for its making, for its direction, हम्म। for its screenplay, for its performances, for its execution, and not
कि यार ये और एक आ गई बीजेपी ने फंड की हुई फिल्म. So first of all, let me be very clear that no, political party has supported me. This is an ओके. independent producer who has produced this film because we like the story. And in my each interview, I've been telling people that even if you take political names and faces out of this story and हम्म. put other people, just say Gabbar Singh, Viru, any name you हम्म. take as hero villain, even then the story will hold on its own. That ओके. is the beauty of match fixing. And that is why ओके. people are loving it. That is why I have yet to meet a person who has to give me a negative, feedback about the film. Everybody has loved the film. Even one of my very senior editor friend who's a Muslim saw the film, हम्म. and his video bite is trending today. He said, as a ओके. Muslim, I'm telling you, you do not have to be apologetic about match fixing um, for whatever cases you've landed up with and all that stuff. As a Muslim, I'm telling you, you're not hurting my sentiments. Whether you like your film or you don't like film, that's another story. But you're not hurting anyone's sentiments. It's not politically driven. ओके. That मतलब was my आपको first. कभी ऐसा लगा कि इस मूवी में आपको पर्सनली आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी से या जिस पार्टी को आप फेवर करते हैं या जिनको आप चाहते हैं कि पावर में आए, वो आपको सपोर्ट करे या बैक करें आपको किसी चीज में? नहीं, मुझे मुझे नहीं लगा क्योंकि उसके more than advantages, there are disadvantages because I don't, I am not making a film for a certain section. हम्म. And see, the film is based on real incidences written by a retired colonel with a lot of responsibility and authenticity. Okay? ओके. I am not manufacturing any of the incidences from my brain or writer's wish. It is, these are things which has happened in the past. Like, ओके. a lot of people ask me, what message are you giving through this film? So I'm not giving any message. I'm asking the government who was ruling between 2004 and 2008 so many awkward questions. आपके पास इंटेलिजेंस था कि नहीं था? हम्म. इतने सारे अटैक्स आपके देश में कैसे हुए? इतने सारे अटैक्स होके आपने रिटेलिएट कैसे नहीं किया? एंड दिस कंपैरिजन कम्स right after 2014 because between 2014 and 24 today till date there are no internal security attacks or हम्म. blasts. How does that happen? ये क्या लक्ष्मण रेखा है कि लक्ष्मण रेखा के उस पार तो अटैक से अटैक है, इस पार कुछ भी नहीं है? हम्म. In a country like India, which is a highly populated country and such a massive country, you cannot comment on any government in a year or two. You have to give them 10, 15, 20, 30 years time. And after seeing Congress rule for 70 odd years, हम्म. BJP comes into power for 10 years, and me as a citizen of this country suddenly saw a lot of difference. How did that happen? How did that happen? I mean, me as a Mumbaikar, हम्म. I used to fear my life. आज मैं घर से निकला हूं, भरोसा नहीं है मैं जिंदा वापस आऊंगा. आज ट्रेन में ब्लास्ट, कल मंदिर में ब्लास्ट, कल बस में ब्लास्ट, हम्म. कल मुंबई पे अटैक, परसों और कुछ, परसों और कुछ. एंड वी यूज्ड टू से स्पिरिट ऑफ मुंबई, स्पिरिट ऑफ बॉम्बे. नॉनसेंस. you know हम्म. I used to get furious as a citizen of this country. What is going on? Why can't we do something about it? And out of this frustration, when I read this book, I made हम्म. sure that I had to come up with this story. And not to take a pot shot at any government or any political leader, but as a responsible citizen of this country, I have all the rights to ask questions. As a taxpayer, I have rights to ask. If I get हम्म. fined for not paying taxes, then my government is answerable to me. ट्रू. If something goes wrong. I have seen a case. My father was admitted in the hospital. ओके. Next room, there are goosebumps on my body. There was a man who was in coma for 2 years. जो मुंबई में जो ट्रेन अटैक हुआ था ना, ट्रेन ब्लास्ट हुआ था. आई डोंट हम्म. रिमेम्बर. Somewhere around after 26/11 there was an attack because my father was admitted in 2010.
So Okay. somewhere between 2009. So that man was in coma for 2 years in that Okay. railway blast, and his daughter was born when he met with an accident. So his wife used to come to visit this man who was in coma for 2 years. So जो छोटी लड़की थी उसने अपने बाप को 2 साल सिर्फ कोमा में देखा था. Hmm. You know, Okay. this is a heart wrenching experience. So your तो ये heart मूवी goes के out बाद to him. किसी पॉलिटिकल लीडर का कोई फीडबैक आया आपको No, कि यू आर डूइंग गुड और no, बहुत ही कमेंडेबल काम किया आपने? no, no, none. नहीं. No. ओके, यू आर एक्सपेक्टिंग. Any good feedback is welcomed here. I mean, why not? फीडबैक इज फीडबैक. Yeah, क्रिटिक्स आर ऑलवेज देयर, तो मतलब yeah. अच्छा भी होएगा बुरा भी होएगा. पॉलिटिक्स की बात करें, कोई ऐसा फेवरेट नेता आपका जिनको दिमाग में रखकर आपने इस मूवी को बनाया हो, या ऐसा सोचा हो कि आने वाले टाइम में ये सब चीजें अब नहीं होंगी, खत्म हो गई है, Hmm. मैच फिक्सिंग का दी एंड हो गया, या होगा या वो करेगा? नहीं, वो मैच फिक्सिंग अगर हमारे देश के फेवर में होता है तो व्हाई नॉट. जैसे, बट स्टिल स्टिल इट इज मैच फिक्सिंग. हमारे नहीं, देश बट के फेवर में है. चीटिंग इज आई चीटिंग. गिव यू एन एग्जांपल. आज एस जयशंकर को बहुत बार हम्म. सवाल पूछा जा रहा है कि आप रशिया से ऑयल क्यों खरीद रहे. हम्म. उन्होंने बोला, आई हैव टू थिंक अबाउट माई नेशन, माई पीपल. हम्म. If I am getting a cheap oil from Russia, and if I am able to control the petrol prices हम्म. in India, then why not? So for me, it's a match fixing, ओके. which is happening in the favor of our country. So why not? Any positive thing in your favor. See, for me, nation first. अगर देश दुरुस्त है तो आप दुरुस्त हो. देश में खलबली है तो आपका हम्म. लाइफ अनसेटल्ड है. यू नीड पीस, सिक्योरिटी एंड हार्मनी amongst all communities and races and religions. You need peace. So whoever brings that peace, harmony, and this thing, I am favoring that government till केदार जी, 2000. आपने सेफ्टी की भी बात करी, आपने पीस की भी आपने बात करी है. अ, जब मूवी आप बना रहे थे, या मूवी हमने जब रिलीज करनी थी, ट्रेलर्स बाहर आए, तो आपको कभी ऐसा लगा कि थोड़ा डर भी होगा, क्योंकि टेररिस्ट एक टेरर टर्म यूज कर रहे हैं हम लोग, तो बहुत सारे लोग हो सकता है कि अ, आपके अगेंस्ट हो, क्योंकि कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं जिनका शायद हम नाम नहीं लेंगे, कम्युनिटीज होती हैं जो अ, आपको अपोज करें, आपके फेवर में ना हो, आपके क्रिटिक बन जाए कि इस टॉपिक पे नहीं बनना चाहिए, दिस इज नॉट ट्रू, ये हो नहीं सकता. तो आपको कभी ऐसा लगा कि आपकी लाइफ के लिए भी एक थ्रेट हो सकता है? नॉट रियल यार, बिकॉज मैंने किसी कम्युनिटी के खिलाफ फिल्म बनाई ही नहीं है. ओके. एंड वी हैड केसेस फ्रॉम कपल ऑफ पीपल हु आर मुस्लिम्स सेइंग हम्म. दैट आपने मलाइन किया है अल्लाह अकबर कह के. बट whoever has seen the film, they have never said anything negative about the film. In fact, they are coming in my support. And ओके. like I said, my intention is never to hurt any community. This is a film about a fake narrative which was being created by that particular government called हम्म. Hindu people. And ओके. क्योंकि यार, I come from Maharashtra. ओके. सैफरन टेरर, जब हम मतलब सैफरन जो कलर हम सुनते हैं ना, तो हम्म. सबसे पहले हमारे जहन में नाम आता है छत्रपति शिवाजी महाराज का. हम्म. ठीक है. और हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने पढ़ा है, उनको ये पता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज किसी भी कास्ट और कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं थे. इनफैक्ट लॉट ऑफ मुस्लिम्स वर इन हिज आर्मी. ओके. सो जो आदमी ने शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्र पढ़ा हो और जो उनका डायहार्ट फैन हो, वो किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट फिल्म बना ही नहीं सकता. ये मैं हम्म. दावे के साथ बोल सकता ओके. हूँ. सो दैट फियर वॉज नेवर इन माई माइंड. वी शॉट इन कश्मीर. हम्म. We got all ओके. the support in Kashmir. My fight master is a legendary fight master called Abbas Ali Mughal. Abbas Bhai हम्म. is a practitioner, hardcore practitioner of Islam. If I had to do anything against Islam, he wouldn't have ever supported me. In fact, हम्म. once you see the film, uh,
there is a dialogue when this Karimullah's character, वो ही ट्विस्ट, वो जो ट्रेलर में है ना, वो गर्दन हम्म। मरोड़ देता है वो आदमी की. हाँ हाँ। Immediately after that, that lady of the house opens the door and she says कि कहाँ रह गए थे तुम, जुम्मन कहाँ है? And he अच्छा। says कि वो अल्लाह अल्लाह के पास गया. लेडी सेज मतलब, तो वो बोलता है कि मतलब बड़ी मस्जिद गया. तो दैट डायलॉग अच्छा। केम फ्रॉम अब्बास भाई, यू नो. अच्छा। ओके। सो इफ आई हैड टू डू एनीथिंग अगेंस्ट इस्लाम और हम्म। एनी कम्युनिटी फॉर दैट मैटर, मुझे सपोर्ट नहीं मिलता. आज हम्म। कोई भी कम्युनिटी का बंदा जाके ये मेरे ऊपर क्लेम नहीं लगा सकता कि मैंने कम्युनल फिल्म बनाई है. हम्म। आई हैव शोन द फैक्ट्स, कैसे रेडिकलाइज किया जाता है, कैसे रिलीजन का यूज करके बुरे कामों के लिए उकसाया जाता है. दैट इज हम्म। द क्रक्स. एंड हम्म। saffron terror was used for the vote politics. So again, you know, it is a fact. एक बुक भी आया था, एक बहुत बड़े दिग्गज नेता थे कांग्रेस के, उन्होंने बुक भी प्रदर्शित किया था कॉल्ड 26/11, आरएसएस की हम्म। साजिश. ओके. हाँ। और मतलब मुझे तो समझ में नहीं आया. पकड़ा गया कसाब, वो निकला पाकिस्तानी, और आरएसएस कहाँ से आया, सैफरन टेरर कहाँ से आया, वो हाँ। मेरे समझ के बाहर था. क्योंकि यार सैफरन हमारे लिए तो छत्रपति शिवाजी महाराज के झंडे का कलर है, हमारे इंडियन ट्राई कलर का कलर है, हम्म। यू नो, वीरता का कलर है, जो एक अ, जो एक गिविंग नेचर है उसका वो कलर है. तो टेररिज्म और सैफरन, आई फेल टू अंडरस्टैंड, सो दैट मोटिवेटेड मी मोर. केदार जी, वाइल मेकिंग अ मूवी आपको कोई ऐसे चैलेंजेस दिखने पड़े कि शायद ये कैसे होगा या कैसे हो सकता है, किसी का सपोर्ट नहीं है, कुछ ऐसा हुआ? So I don't see any problem in making such films. I mean, when you're making it with clean intention, and you're not हम्म। uh, making a film to create a propaganda. And like I said, I do not have any backing of any political party. This is my personal opinion. I like the story, and even without a political name or look-alike face, it will stand on its own. Like you see the ingredients हम्म। of the film. हीरो है, विलन है, सिचुएशन है, ओके। जियो पॉलिटिक्स है. So it will, more often than not, it will hold and people will like it when you're not doing it out of any wrong intention. चैलेंजेस की हमने बात कर ली। अब मैं जानना चाहूंगा कि मनोज जोशी, जो कि एक लेजेंडरी एक्टर है, उनको आपने कास्ट किया अपने मूवी में, कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? क्योंकि उनको मूवी समझाना, फिर उनकी तरफ से वो अप्रूवल मिलना, क्या रहा आपका एक्सपीरियंस? यार इट्स अ बिग स्टोरी. व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट माय असिस्टेंट लाइफ, मनोज जोशी सर ने कॉर्पोरेट में काम किया था. हम्म। 2003 या 4 में हमने वो शूट किया था फिल्म. आई डोंट ओके। रिमेम्बर द ईयर एग्जैक्टली. एंड आई वाज जस्ट 2-3 years old as an assistant cameraman in the industry. ओके। So, since then I am looking up to him and such a stalwart, so many films, so many good characters. So when I signed the film, my producer told me that she has worked with him in theater scene and we should go and meet him and we should cast him in this film. So I said, we can't cast anybody just because we've worked with him or हम्म। her. You know, that particular actor has to fit the bill. सो हमने बुक पढ़ी, जो रियल लाइफ कैरेक्टर्स है उनकी फोटोज हमने सॉफ्टवॉल पे लगाई, मुशर्रफ, कयानी, दिस दैट, एंड सडनली आई रिमेम्बर्ड शी मेंशनिंग अबाउट मनोज सर. एंड आई गूगल्ड परवेज मुशर्रफ्स फोटो, हम्म। and I googled Manoj Joshi sir's photo. I just want to show you something on screen, very funny. I will हम्म। send you the photo also, but you just see, this was the first photo I googled and put as a collage, and you see the striking similarity between two faces. वेरी सिमिलर। Okay, and this हाँ। was our first casting. Now for us, we are through. Wow, मिल गया मुशर्रफ हम्म। सबसे बड़ा, because he holds a very pivotal and main character in the film. We went to meet हाँ। him, told him the story. He loved it. He said, "Wow, amazing, this that," and then he asked me, "मेरा क्या है?" तो मैंने यही कोलाज हम्म। दिखाया. अच्छा। उन्होंने सर पे हाथ मार लिया. मेरे को बोलते हैं, अरे भाई मैंने अभी ना
भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का रोल किया, मैंने योगी आदित्यनाथ साहब का रोल किया। हाँ। तो मुझे यार ये परवेज मुशर्रफ, तो मैंने बोला यार गया चांस, अभी मेरे को ढूंढना पड़ेगा दूसरा मुशर्रफ। बट एवरी एक्टर की, एवरी हाँ। कलाकार की ना, हर कलाकार की एक ग्रीड होती है कि अच्छे हम्म। कैरेक्टर्स, वेरियस कैरेक्टर्स, चैलेंजिंग रोल्स। सो ही इमीडिएटली टुक इट अप एज अ चैलेंज एंड ही हम्म। ग्रेशियसली सेड यस टू मी। उन्होंने बोला कि मैं कर रहा हूँ, तू तैयारी अच्छी कर, मेरे को अच्छा रो मतलब डायलॉग्स एंड आई नीड टू हम्म। परफॉर्म वेरी पावरफुल सीन्स। And he just loved it. I mean, he still, we speak about the film and promotion and how things are every day. हमारे दो कॉल तो होते हैं, and he calls me, अच्छा। such a big अच्छा। legendary actor, because he's loved the film so much, you know. So that mutual respect we've developed. So it was क्या a प्लान funny. है आगे के, और क्या मूवीज आपने करने का सोचा है? क्या टॉपिक्स आप लेंगे? और स्पेशली कौन आपका फेवरेट एक्टर है जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं? यार बहुत बहुत सारे एक्टर्स हैं, हिंदी साउथ। मैं एक का नाम लूंगा तो वो बहुत, मैं एकदम ऐसे किसी के लिए बायस्ड हो जाऊंगा, बट मुझे हम्म। बहुत सारे लोगों के साथ काम करना है, बहुत सारे एक्टर्स है, टेक्नीशियंस है जिनके हम्म। साथ मुझे काम करना है, जिनका, आई मीन नॉट ओनली एक्टर्स बट देर आर सो मेनी प्रोडक्शन डिजाइनर्स, कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स, फाइट मास्टर्स, और देर आर हम्म। सो मेनी सिनेमाटोग्राफर्स जिनका काम मैं एडमायर करता हूँ यार। एंड एक्टर्स तो मतलब मोर द मेरियर, जितने लोगों के साथ आपको काम करने की चांस मिल सकता है उतना आपने एक्सपीरियंस लेना चाहिए। सो आई हैव वेरियस सब्जेक्ट्स, पॉलिटिकल थ्रिलर्स भी है, नॉर्मल थ्रिलर्स भी है, लव स्टोरीज भी है। वट एवर आई हैव लाइक फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स, आई हैव चॉक्ड इट आउट हम्म। एंड सिलेक्टेड दोज फ्यू फॉर माई सेल्फ। अब देखते हैं इसके बाद कैसे रिस्पॉन्स आता है, कौन मुझे अप्रोच करता है, किस तरह का प्रोड्यूसर, और हम्म। आई नीड टू अप्रोच फ्यू। सो आई हैव स्टार्टेड मीटिंग पीपल, लेट्स सी व्हाट हाँ। वर्क्स आउट। सब अच्छा ही होगा। अभी इतना अच्छा आपने प्लान किया है और इतना अच्छा मूवी आपने प्रोड्यूस डायरेक्ट किया है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोग पसंद करेंगे, क्योंकि हर किसी की पसंद का टॉपिक है ये। अब या बिफोर वी रैप अप, केदार जी, 24 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में। जो लोग नए हैं, जो आना चाहते हैं डायरेक्शन में या सिनेमेटोग्राफी में, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप कि जो गलती हो सकता है आपने कभी करी हो वो ना करें? और आसान तो कुछ भी नहीं होता है, तो थोड़ा बहुत आसान आप कैसे बना सकते हैं? एक मैसेज। सी, यू नीड टू हैव three things in mind. I followed that in my career: हम्म। patience, passion, and practice. Three P's if you follow, you know, ओके। then you will have, maximum possibility of reaching at your aim, your goal that you're setting up for yourself. You need to be patient. कोई भी चीज फिल्म इंडस्ट्री में ओवरनाइट नहीं होती फॉर टेक्नीशियंस, ओके? यू नीड टू लर्न योर क्राफ्ट डे इन एंड डे आउट. You have to assist, work, learn from best in the industry. There is no other alternative. Even if you come from any film school, you have to assist, learn from the legends. First, you have to practice, practice, and practice. Even when you become an independent technician, you have to keep on हम्म। practicing your craft. There is no other alternative. You make mistakes, and as a human, everyone makes mistakes, but very few accept those and move on. When you accept your जी। mistakes only, then you can learn. So it's absolutely fine to make a mistake. I have noted down some mistakes from match fixing, and हम्म। I am going to learn, and I'm going to that. And then, without a passion, people look at film industry for glamour and all those things which do not exist. प्रीमियर एक दिन होता है, हम अच्छे कपड़े हम्म। एक दिन डालते हैं, उसके लिए सालों की मेहनत लगती है। 1.5 साल जी। फिल्म बनाने में लगता है, स्वेट एंड हार्डवर्क एंड ब्लड एंड व्हाट नॉट। एक दिन अच्छे कपड़े डाल के हम प्रीमियर में जाते हैं, उसके लिए आपको हार्डवर्क करना जी। पड़ता है 1.5 साल। सो पैशन, विदाउट पैशन यू विल नॉट सर्वाइव इन दिस इंडस्ट्री। सो लाइक आई सेड, मैं फर्स्ट डे शूट पे गया और मैं 9 घंटा, आई जस्ट स्टूड देयर like I was awestruck, not by star, but the work style and what was happening around me. And then I realized that I am definitely passionate towards this हम्म। side, this field. So one has to understand what you're passionate about, your goal, your passion, and then, like I said, practice and patience.
Thank you very much, Kedarji, for being on this show, and wish you all the best for the movie. जैसा आपने सोचा है, आई होप वो वैसा ही जाए, क्योंकि आपने काम ही बहुत बेहतरीन करा है। लोग आपके काम की सराहना ज्यादा करें, मैं तो वही चाहूंगा। विद जी दिस बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो लोग हम लोग को देख रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।